Hello, everyone. Very, very good morning and welcome you all on a very bright Sunday morning. So, on behalf of Atal Innovation Mission team, this is Suman Pandit. Uh, so, thanks a lot to all the teachers, all the mentors, all the students who have joined us today on this exciting episode of the School Innovation webinar series. Uh, so, uh, hope you all are all geared up and we are approaching the last stage of the School Innovation Marathon. It's great to see so much enthusiastic entry, so many projects coming out from all across the country. So we have been seeing like more than 15,000 projects already uploaded as a part of the School Innovation Marathon series on the portal. And there are more than 1.5 lakh teams who have been formed till now. So thanks a lot for all the support. Very much thanks to all the state nodal officers who have been facilitating this journey, the ATL teachers, and most importantly, the students who are in the lab and innovating and building these projects. So we are here after a very short break. We had hope you all had a great Diwali and all the festivities around in your states and your region. And today we are focusing on a very important topic that you were suggesting. Like in the earlier webinars, we asked you what kind of project, what kind of videos, what kind of webinars would you want to like have guidance on. So most of the students and teachers had actually told that in this project, in the School Innovation Marathon, we need to build a project, then we need to create a video. And how like the main problem comes is that the project is created, but how do we create a video? How do we create a very good video that will help us win the School Innovation Marathon? So here we are for the same. So today's topic that we'll be covering in the next 30 minutes would be on how to actually create an exciting and engaging video for your School Innovation Marathon project. So with me, I have a very exciting expert. I have Samay with us, Samay Sahu from the Bharat Pi team. Samay, if you can just say hi to everyone. Hi everyone. Yeah. So Samay is a video creator come engineer. He builds projects. You might have seen many of his works, many of his videos as a part of the ATL equipment video series that we have recently launched. We have launched our 8 videos in this. So the first, like most of the videos in this series have been started, done and created by Samay. So thanks a lot, Samay, for coming and giving out like your valuable time today. And we hope that the students are very excited for the next 30 minutes to learn about how to actually go towards the video creation journey. And so one thing I'll just give a brief recap of what School Innovation Marathon is. It's the biggest innovation challenge for all school students across the country, hosted by Atal Innovation Mission, Niti Aayog, the Department of School Education, Ministry of Education, as well as AICTE. So there are exciting prizes to be won. So 1.5 lakh rupees grant to each winning team. There are student internship programs with various corporates and incubation centers across the country, and many more. So there are showcase opportunities that will be coming up in the next year. So it's an amazing opportunity for all the students and teachers to showcase their talent. Whatever you're doing all across the year in the School Innovation Marathon, you can just upload your projects and submit them. A very important stage in the School Innovation Marathon is that like you need to create the video, and that is the reason why we have Samay here. So without wasting any further time, I would like to invite Samay and hand over the stage to Samay. So Samay, yeah, stage is all yours. Thanks a lot for helping us out, and over to you. Thank you so much, Suman. So hi guys, myself Samay. I'm working as a AI and robotics engineer at BharatPi. So you all have to submit a project in a video form. You will be uploading on YouTube. So you will be knowing like, so I will tell you how you can add that, like what are the things that are required in video, how you should edit that, from where you should take the videos, which song we should use. So there will be so many things which you should keep in mind. So thank you Atul for giving me this opportunity. So I will just share my screen. So I was just checking, there were around 300 plus students and teachers who have joined over here. And can we just tell them that video creation is not a very big rocket science. It is a very important skill and very easy skill actually to get started with. Many students might be editing videos in the form of YouTube shorts, or many actually students want to become YouTubers in the future. So
It's a very easy thing, not a very difficult thing. Like if we can stress upon it also a little bit, it would be very helpful. So like video creation is very important. It depends like if you are able to create what for video creating, you just need a phone. That's it. You need a small script for it. You should know how like little bit about how to edit the video. That's it. If you know that, then your video is ready. So I will just share something which will make your video more engaging, more creative, what you can make it, like how you should make a video, what are the things you need to explain in a video, because every student needs to explain their project in the video. So what are the things we should cover in that video? I will tell you that. So first thing is like why you should create a video. You can show up an image also. Why we should create a video. So there are some points which you should keep in mind. Better information retention. So like if I will show you an image, you will be not getting what this project is about. Like what is the working of this project, what the components they have used, what future like in future what I can implement this in this project, in future like what is the use of that project. So, but in video, you can explain like this is the project, what is the working of the project, what are the components I have used in this project, in future, what more can be implemented. But in image, you will be not getting that. In image, you will be just seeing a project image. That's it. You will be not knowing what are the components they have used. So these are the things which you should keep in mind. So engaging multiple systems. Like I think most important thing is that like you are not over there in front of the jury showing your project or showing your creation. You have worked on it for about 2-3 months, and the only representation that goes to the jury or the evaluator is just that 3-minute video. So that is the whole effort of yours that you have done for the whole 3 months, and you are combining it to one single product. And that is the presented video that will be doing. Yeah, correct. So second point is like engage multiple senses. Like in an image, you will be just seeing it if possible. Yeah. Yeah, sure. So now engaging multiple senses, like in an image, you will be just seeing the image, but in video, you will be having a audio, text, transition, which will make it creative. With audio, you can explain about the project as I told you. So what project is about, what are the things you have used. So many things with audio, you can explain that. And third thing is like it will be simplified. It will be not like complex in like if I will show you some image of a microcontroller, which you have not seen in past. So you will be not knowing what is the use of that thing, what it is used for, what I can build with it. But if I will show you in a video like this microcontroller is about this thing, you can connect different sensors to it, you can program it, you can build a project with it. So you will be knowing, okay, this microcontroller is about this, I can build this thing with this controllers. So in video, you can explain so many things about your project. Build emotional bonds. Like you have seen some movies. In movies, how it is like there will be some scenes which will relate with our daily life. Like if you're creating some projects like home automation or irrigation system. So I must think like, what is the use of this project where I can use it like irrigation system? I can use this for plantation, home automation. Okay, I can use this for controlling my home appliances. So you should correlate it with your daily life. And fifth one is like time efficient. Like if you're creating some video, so you can create in chunks. 3-minute video can explain about your project. But in image, you will see that image for 5 minutes, but you will not get anything. This project is about what? But in video, in 3 minutes video, you can explain so many things about that project. So now we will start a thing like what you should do before creating the video. So you should take a pen and paper. You should write a script, beautiful script you should have. So you can add like what are the components you have used, introduction about your project, what more we can implement in future, what this project is about. So you can add in a script and then you should practice it. So you can record it. Or like if you don't know how to write a script, so there are some tools like ChatGPT. It's a free tool. You can log in with your Gmail and you can ask to ChatGPT like if you have created a project, assume like home automation you have created. So you can ask to ChatGPT, hi ChatGPT, I have created a project which is home automation. Can you give me a small script for it? And you can add like what you want. You need an introduction, you want explanation, you want a small closing of that video with a beautiful ending like thank you for watching this video, subscribe for more videos, something like that. So you can add that in the video and you can customize the script. Like if you want to add more details about your project, like some components are there which you have not used, so you can remove them. You can customize your script and you can add more project details. Like if you want to add something more about your project, like future implementation, if ChatGPT has not given, you want to include that, include in a script, write a beautiful script,
Once the script is ready, you are ready to go for a recording. So now recording is the like most important thing I would say, because this is what viewers will watch. अगर आपका video quality अच्छा नहीं है तो no one will watch. So some of the things like which you should keep in mind before recording the video. First thing is आपका जो background है वो clean होना चाहिए. Like there should be no object in the background. It should be clean because the object is there. So whatever thing is, I will watch that object, not your project. So nothing should be there. Only your project should be there. You can keep that project on a table. And in a video, like if you have 4 members in a team, तो फिर 4 ही members होने चाहिए. ये नहीं कि आपका friend उस video में आ रहा है. So it will not look good. Only 4 people should be there. So, and second part is like your camera should be steady. So what people will do is they will hold camera in phone, so it will shake like this. So it will not look good. So you can use a tripod for it. If you don't have tripod, so you can do some jugaad. You can use like books, or you can create your own tripod with like PVC pipe you can use. On the top of that, you can make some holder for phones. You can use a rubber band for holding it. Once you are ready with it, just put it somewhere, start recording your videos. Once so now the main thing is you can use two phones. One if you have two phones, then you should use two phones only. One for audio recording and one for video recording. Because in audio there will be some background noise. So I will be telling you how you can remove that background noise in the next slide. Some if you can just repeat it once again in Hindi, because in the YouTube chat box I'm just seeing like there are many people who are telling that please. Yeah. Sure. We can just recap So the 4 points because very important points. In Yeah. Hindi So like तो अगर आप देखते हो तो आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज होगा तो मेरा फोकस उस इमेज पे जाएगा. लाइक अगर कोई फोटो फ्रेम है तो मैं उस फोटो फ्रेम को देखूंगा, ना कि आपके प्रोजेक्ट को. तो बैकग्राउंड आपका क्लीन होना चाहिए. आप एक टेबल यूज कर सकते हो, उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट रखो. इफ अगर आपकी टीम में 4 लोग हैं तो 4 ही बंदे होने चाहिए. लाइक ऐसा नहीं कि आपका फ्रेंड आपके वीडियो के बगल में आ रहा है, वो बीच में आ रहा है, तो वो वीडियो अच्छा नहीं लगेगा. ओनली 4 members आर देयर, दैट इज इनफ. देन जो आपका फोन है तो लाइक most of the people what they will do is they will use phone something like this, so वो ऐसे मूव होगा तो it will not look good. तो आप क्या कर सकते हैं, एक ट्राइपॉड अगर आपके पास है तो that is great. If you don't have tripod, so what you can do is पीवीसी पाइप होता है, आप उनको लो, ऊपर फोन को ऐसा होल्डर समथिंग, इसको ऐसे होल्ड कर लो, इधर रबर बैंड ऐसे आप लगा सकते हो तो वैसे होल्ड हो जाएगा. जैसे वो होल्ड हो जाए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो. तो यू विल हेल्प, तो आपके पास आपका खुद का एक ट्राइपॉड हो जाएगा, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो. और आई विल सजेस्ट कि यूज 2 फोन्स. आप 2 फोन यूज कर सकते हो, लाइक एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और एक आप यूज कर सकते हो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए. वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो तो जब आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो बैकग्राउंड में बहुत सारे नॉइस रहते हैं. जैसे फैन का नॉइस रहेगा, कोई टीचर अगर बोल रहा है तो उसका नॉइस रहेगा, आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है तो उसका नॉइस रहेगा. तो आपका जो वॉइस है वो मतलब मिक्स होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा. तो आप वो 2 फोन यूज करोगे तो इन फ्यूचर लाइक नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको बताऊंगा कि आप वो बैकग्राउंड नॉइस कैसे हटा सकते हो. तो उस वीडियो में सिर्फ आपका वॉइस रहेगा तो बैकग्राउंड नॉइस रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा. एंड वन मोर थिंग, आप ये इमेज देख सकते हो. इस इमेज में ना आप अगर देख रहे हो जो कैरेक्टर है, जो लाइक अगर आप लोगों को तो वो सेंटर में होना चाहिए. ये नहीं कि आप एकदम वीडियो के एकदम साइड में जा रहे हो, वीडियो ये साइड आपका एकदम खाली है. जैसे कि मैं एकदम सेंटर में बैठा हूँ तो ये साइड और ये साइड इक्वली हो गया, मैं बीच में आ गया. बट अगर आप देखते हो तो बहुत से लोग क्या करेंगे, वो साइड में शिफ्ट हो जाते हैं तो ये साइड वाला कॉर्नर एकदम खाली हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा. फ्रेम को सेंटर में रखो जितना हो सके तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. So we will go to next If we slide. can just screen like pause the screen sharing a bit. एक और important tip है, if we can share. Like I just wanted to tell them that how to place the product inside a video. If we can just pause the screen sharing, like stop it for a bit. Yeah. So बच्चों like whenever you are actually creating the video, एक बहुत important part आता है आपका project. तो बहुत बार हमने देखा है कि like जब बहुत सारे students project submit करते हैं, like 3 जन खड़े होते हैं और उनके सामने छोटा सा इतना सा project होता है. उसमें क्या होता है कि जो इवैल्यूएटर होता है उनको प्रोजेक्ट आपका समझ में नहीं आता. तो जब आप लोग पहले जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, लाइक आपका वीडियो को जब आप स्ट्रक्चर दोगे तो पहले आप बताओगे आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपने क्यों बनाया और कैसे बनाया. तो तब आप लोग स्क्रीन पे तीनों हो, ठीक है. बट जब आपका प्रोजेक्ट का वर्किंग बता दो या फिर उसका एप्लीकेशन बता दो तो कंसिडर करो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है. ये मेरा प्रोजेक्ट है. तो अगर मैं ये प्रोजेक्ट का वर्किंग में बता रहा हूँ तो ये प्रोजेक्ट मेरे स्क्रीन का 1/3 हिस्सा या फिर 1/4 हिस्सा लेना चाहिए. मतलब ये बहुत ही अच्छे से आपको दिखाना चाहिए कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं हो कि आप तीनों दिख रहे हो और छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट का वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे हो और उनको इवैल्यूएटर तो समझे ना कि आपका प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है. तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो तो प्रोजेक्ट ही दिखे.
तब हो सकता है आप लोग बैक सीट पर जा सकते हो प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस करके। और अगर आप कंपोनेंट्स बता रहे हो, let's say that you have used an Arduino, you have used a Node MCU, you have used a MQ6 gas sensor, you have used a moisture sensor, तो आप जब बताते हो तो try to zoom in अगर possible हो तो। अगर नहीं पॉसिबल है तो ठीक है, बट अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करो कि उसको जूम इन करो। और हम सोच समझ सकते हैं बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स के पास अगर एक ही कैमरा है, एक ही मोबाइल फोन है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ट्राई करो कि एकदम बंद कमरे में शूट हो या फिर ओपन में जहां पर कोई भी शोर ना हो। अगर आपको लाइटिंग चाहिए, समय व्हाट डू यू सजेस्ट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ लाइट दैट दे कैन यूज? So what they can do is they can use 2-3 CFLs, like small light they will be having, because light is the most important thing they should have. एग्जैक्टली। तो लाइट आपकी वीडियो में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट अच्छे से दिखेगा नहीं। लाइक आपके जो कंपोनेंट्स है, प्रोजेक्ट की वर्किंग है, उसके लिए आपको अच्छी लाइट यूज करनी होगी, बिकॉज दे कांट बाय एक्सपेंसिव लाइट्स। सो या व्हाट यू कैन डू इज, तो आप लोग क्या कर सकते हो, CFL यूज करो। लाइक आप 2-3 CFL एक साथ कनेक्ट कर सकते हो तो वो बहुत सारी लाइट हो जाएगी। और या तो फिर बेस्ट आपका जो लाइक स्कूल रहेगा, ओपन ग्राउंड रहेगा, आप ग्राउंड में जाके कर सकते हो, तो आपके पास सनलाइट रहेगा, वो बेस्ट सोर्स है लाइट का। बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट सनलाइट, आई वाज कमिंग टू या दैट एक्चुअली। अगर वो सनलाइट अगर बेस्ट है। कोई यूज कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो बेस्ट टाइम ऑफ सनलाइट भी होता है। एक टाइम होता है करेक्ट। कि 7 o'clock to 10 o'clock सबसे अच्छा सनलाइट आता है जिसको, और एक हाँ। और गोल्डन आवर बोलते हैं 4 o'clock to 6 o'clock का। तो अगर या आप 4 o'clock to 6 o'clock इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में 7 o'clock to 10 o'clock, उसमें क्या होता है कि बहुत ही अच्छा लाइट आता है। अगर वो नहीं हुआ तो आप नॉर्मल टाइम में भी यूज कर सकते हो, बिकॉज सनलाइट का सबसे ज्यादा लाइट होता है। और हर चीज में अगर आपको ओपन में आप कर रहे हो तो ये बस ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा शोर आजू बाजू से ना हो, तो उससे क्या होता है कि लाइक आपका वीडियो में इंटरफेरेंस होगा। बट बेस्ट अगर आप कर सके तो सनलाइट यूज करो, या फिर समय सर एज यू हैव टोल्ड की CFLs यूज करो, LEDs यूज करो, वाइट। बस ये है कि लाइट होना चाहिए, अंधेरे में मत शूट लाइट होना चाहिए, या दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो दिखना चाहिए जब भी व्यूअर आपकी वीडियो देखेगा। क्योंकि अगर डार्क है तो फिर मैं आपकी वीडियो क्यों देखूं, मेरे को समझ ही नहीं आएगा ना आपके वीडियो में है क्या। तो लाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ वीडियो, तो उस पर ध्यान दो। आप सनलाइट में कैप्चर कर सकते हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि स्कूल में तो आप सब जाएंगे प्रोजेक्ट लेके जाओ, वहां जाके शूट करो अच्छे से, तो वो कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें जो वीडियो में होनी चाहिए, लाइक लाइट तो मेन है। आपका जो कैमरा है वो एकदम स्टडी होना चाहिए, नहीं कि कोई फ्रेंड है वो आपका होल्ड करा हुआ है कैमरा, वो आपकी वीडियो बना रहा है, वो बेकार लगेगा, उसको अवॉइड करो। यूज अ ट्राइपॉड इफ पॉसिबल, इफ यू डोंट हैव ट्राइपॉड डू सम जुगाड़, कोई जुगाड़ करो ट्राइपॉड बनाने का। यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू मेक ट्राइपॉड विद कार्डबोर्ड, हाउ टू मेक ट्राइपॉड विद PVC पाइप, बहुत सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राइपॉड बना लेते हो, उसके बाद अपना फोन को स्टडी कर सकते हो, वीडियो बनाओ अच्छे से। और इफ यू वांट, लाइक आपके पास दो फोन नहीं है, आपके पास एक ही फोन है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक फोन से आप रिकॉर्डिंग करो, सेम से आप वॉइस रिकॉर्डिंग करो। तो आप इन फ्यूचर क्या कर सकते हो, आप क्रोम पर जा सकते हो, वहां सर्च कर सकते हो हाउ टू कन्वर्ट MP4 टू MP3। आप MP4 को MP3 में कन्वर्ट करो। एक बार आपको MP3 फाइल मिल जाता है, तो आप उस MP3 फाइल के अंदर से आप बैकग्राउंड वॉइस को रिमूव कर सकते हो। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ यू कैन डू दैट। सो फर्स्ट नाउ वी विल गो टू द एडिटिंग पार्ट। ये एडिटिंग पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे हिसाब से। तो अभी अगर आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप सबके पास फोन ही होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास फोन है तो फोन के लिए ऐप्स है, लाइक VN ऐप होता है, और फिल्मोरा है, बहुत सारे काइन मास्टर है, जिसमें आपको लाइक इजी लगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा VN ऐप को यूज करो, वो फ्री टू यूज है, बहुत इजी है यूज करना। तो आप उसको यूज कर सकते हो, वीडियो उसमें आप लाइक टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, बहुत सारे कट एंड पेस्ट कर सकते हो, लाइक ट्रांजेक्शन डाल सकते हो, so that your video will look good. And so there is a software, if you are using a PC, then there is a software called CapCut. It's a free software, you can download it from Chrome। आप एक बार वो डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि CapCut कैसे यूज करता है। सो दिस इज बेसिकली द CapCut सॉफ्टवेयर विच इट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट का साइन दिखेगा, जस्ट इम्पोर्टेड, क्लिक ऑन दिस। तो ये आपको आपके गैलरी में लेके जाएगा, लाइक जो लैपटॉप के अंदर जहाँ पे आपका वीडियो, वहाँ पे जाओ लोकेशन पे। सो assume this is the video which I want to like edit। I will select this video, मेरे को ये वीडियो मिल जाएगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। एक बार मेरे को वीडियो आ जाता है। सो लाइक इफ यू वांट टू रिमूव सम पार्ट, लाइक ये पार्ट सही नहीं है, तो देयर इज अ साइन, जस्ट क्लिक ऑन दिस, इट विल कट दिस मच पार्ट। मेरे को इतना पार्ट हटाना है, तो मैं इसको
इसको इतना सिलेक्ट करूंगा, फिर से कट पे क्लिक करूंगा, ये इतना कट हो गया, प्रेस द डिलीट बटन, ये आपका रिमूव हो गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू ऐड सम म्यूजिक टू इट, फिर से जाओ यहाँ पे ऐसे, लाइक इन डाउनलोड्स आई हैव सम ऑडियोज, सो आई विल सेलेक्ट दिस ऑडियो। ये ऑडियो इसमें आ चुका है, इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। इसको मैं जूम कर सकता हूँ अपने माउस और स्क्रोल से। इफ आई वांट टू रिमूव समथिंग इन ऑडियो, सेम जस्ट सेलेक्ट करो जो आपको जो पार्ट रिमूव करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस। अगेन इफ यू वांट टू रिमूव द लेयर, इसको सेलेक्ट करो एंड रिमूव दिस, इजी। सो आप एक बार आपका वीडियो एडिट हो जाता है, आपको कुछ इधर से आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर में आपको एक बार देखना होगा, लाइक यू कैन गो टू यूट्यूब, सर्च हाउ टू यूज कैपकट सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, एक बार देखो उसमें क्या क्या चीज़ है, लाइक हाउ यू कैन यूज ट्रांजेक्शन, हाउ यू कैन ऐड कैप्शन टू योर वीडियो। सो अगर आपको अपने खुद का कैप्शन डालना है, तो लाइक आप जो ऑडियो डालोगे उसका कैप्शन अगर आपको उस वीडियो में डालना है, तो इधर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैप्शन यूज करने का, यू कैन यूज दैट ऑप्शन। And if you want to add some effect to your video, if you want to add some text, some audio, you can do so many things with software. एक बार जाओ YouTube पर सर्च करो, so many things are there. एक बार आपका वीडियो रेडी है, just click on this export. यहाँ पे I will suggest use 2K, 2K is enough, and you can FPS rate should be 60 or 30, depends on your need. Then you can just click on export, and you are ready to go. Now, if you are using a VN app, so VN it is like on Play Store, you will just go search for VN। VN के लिए सर्च करो, आपको एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करो। VN भी एक सेम ऐसे ही है, आप अपने सो फर्स्ट सीन इट विल शो यू लाइक इंपोर्ट इमेज और वीडियो, जो आप एडिट करने वाले हो आप इंपोर्ट करोगे अपनी वीडियो को। वहां पे अगर आपको कुछ टेक्स्ट डालना हो टेक्स्ट डाल सकते हो, और कुछ रिमूव करना हो कुछ पार्ट, यू कैन डू दैट ऑल्सो। और एल्स यू वांट टू ऐड सम मोर वीडियोस टू दैट, सो आप दो वीडियो को मर्ज कर सकते हो। सो मेनी थिंग्स आर देयर। And if you want to add some caption, you can do with that. If you want to add some background music, now the background music is the biggest thing, क्योंकि आप YouTube पे अगर आप कोई भी सॉन्ग डाल दोगे, किसी मूवी का सॉन्ग डाल दोगे, तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा, which is not good, which is you should not do that। और बैकग्राउंड म्यूजिक लाइक ऐसा नहीं है कि आप कोई गाना डाल रहे हो बैकग्राउंड में, लाइक सम लिरिक्स आर देयर, सो यू शुड नॉट यूज दोस थिंग। एक सॉफ्ट सॉन्ग होना चाहिए जिसमें लाइक पियानो बज रहा हो, गिटार बज रहा हो, लाइक सॉफ्ट होना चाहिए। और बैकग्राउंड में आपका वॉइस आना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई सॉन्ग डाल रहे हो उसमें वो सॉन्ग भी आ रहा है, आपका वॉइस भी आ रहा है, तो वो कोरिलेट नहीं होगा, वो बहुत बेकार लगेगा। Yeah, actually, दूसरा, students can put instrumental, like these kind of या sounds are called as instrumental sounds, जिसमें voice नहीं होता, सिर्फ music होता है। करेक्ट, इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स यूज कर सकते हो, YouTube स्टूडियो में बहुत सारे साउंड्स फ्रीली अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हो। पर एक चीज याद रखना कि बैकग्राउंड का वॉल्यूम 10% या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका 100% होना चाहिए, बैकग्राउंड का वॉल्यूम 10% होना चाहिए। तो लाइक ट्राई टू कीप द बैकग्राउंड वॉल्यूम एज लो एज पॉसिबल, बिकॉज एज समय सर इज टेलिंग वी शुड हैव इट, लाइक योर वॉइस शुड बी द मेन फोकस ऑफ इट। या तो नाउ आई विल टेल यू, लाइक इफ यू हैव द MP3 फाइल, नाउ अगर उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक है, जैसे कि आप रूम में कर रहे हो, तो उसमें फैन का बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है, कोई अगर कुछ बोल रहा हो। वन मोर थिंग, आप जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फैन बंद करो, गेट लगाओ रूम का, क्योंकि कुछ like, अगर फैन चालू होगा 100% उसका वॉइस आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा हो जाएगा। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो दैट इज गुड, बट अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया उसके अंदर बैकग्राउंड नॉइस है, तो हाउ यू कैन डू दैट आई विल शो यू। तो जस्ट गो टू गूगल, कैन सर्च फॉर enhance ऑडियो, क्लिक ऑन इट, आपको यहाँ पे मिलेगा अडोब ब्रॉडकास्ट, इस पर क्लिक करो। सो बेसिकली ये एक AI टूल है, ये आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपने बैकग्राउंड नॉइस हटाना हो, तो जस्ट लॉग इन विद अ मेल, अपने मेल से इसको लॉग इन करो, चूज अ फाइल। सो आप इसको अपने फोन में भी यूज कर सकते हो और लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लैपटॉप में वर्क करेगा, फोन में भी आप यूज कर सकते हो। सो जस्ट सेलेक्ट द फाइल विच यू वांट टू, लाइक अगर आपने रिकॉर्डेड फाइल MP3 में कन्वर्ट कर लिया और यू हैव MP3 फाइल, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट। मेरे पास ये एज एग्जाम्पल मैं ये वाली फाइल ले रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सो व्हाट इट विल डू इज इट विल टेक सम टाइम फॉर रिमूविंग अ बैकग्राउंड नॉइस, सो वी विल वेट फॉर 30 seconds I guess। एंड समय सर दिस इज फ्री राइट? या इट्स फ्री, इट्स टोटली फ्री, बिकॉज इन लाइक आप सबके वीडियोस के लिए आपको क्या 30 मिनट्स चाहिए, ये 30 मिनट्स ट्रायल देता है, तो लाइक दे विल बी हैविंग ओनली 2-3 ऑडियोस, सो दे कैन इजिली यूज इट। So this is the audio which we have received. So it's a
दिस अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो फिर एनहांस वॉइस नहीं होगा, इसमें लाइक नॉइस रहेगा। एक बार आप क्लिक कर देते हो तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस इट विल रिमूव ऑल द बैकग्राउंड नॉइस। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो ये आपका वॉइस डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहे कि आपको एक और करना है, जस्ट क्लिक ऑन अनदर। यहाँ पे आप एक और अपलोड अपलोड कर सकते हो। सो बेसिकली हाउ इट विल बी। सो ये सो एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी वॉइस। So now if I will click on this, this is the audio which you will get after removing all the background noise. So maybe we are unable to hear. I think you'll have to share computer sound. Okay. So I think like they can use this. It's very easy to use. So actually Just you choose can the try it out. Like आप कोई भी एक audio use करके आप डालकर एक बार try कर सकते हो. It's completely free. वो खुद से yeah, try कर सकते हो. बहुत सारे हैं। तो ये एकदम इजी है। आप बैकग्राउंड नॉइज से निकाल सकते हो, आपने ऑडियो में यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर बैकग्राउंड नॉइज होगा तो वो वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। एंड वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपको बस एक बार ऑडियो आ गया तो ये नहीं कि आप आपके पास वॉइस है तो फिर आप उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाल रहे हो जो इंस्ट्रूमेंटल है। एक इंस्ट्रूमेंटल वॉइस डालो, सॉन्ग डालो, उसका जो साउंड होगा वो बहुत कम कर दो। लाइक अगर कुछ कुछ फेस ऐसा रहता है वीडियो में जहाँ पे कुछ आपका साउंड नहीं रहता, तो व्हाट इट विल लुक लाइक, इट विल बी एम्प्टी विच विल नॉट लुक गुड। तो जहाँ पार्ट एम्प्टी है वहां पे आपका इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग रहेगा, तो वो थोड़ा एंगेजिंग रहेगा कि हाँ ठीक है, ये वीडियो में कुछ होने वाला है आगे। ऐसा नहीं कि आप वहां रोक दोगे तो व्यूवर्स को लगेगा कि बस हाँ वीडियो खत्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं। तो ट्राई टू ऐड दैट बैकग्राउंड म्यूजिक। अब ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड बहुत ज्यादा ही कर दिया है कि आपके और बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों मैच हो, तो वो बेकार लगेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम कम होना चाहिए, आपका जो वॉइस है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि व्यूवर्स को आपका वॉइस सुनना है, वो ज्यादा मेन है। तो वो चीज ध्यान रखो, वो चीज मेन है। एंड देन And somewhere we are in the meantime we are getting a lot of questions in the YouTube chat box. So ओके, shall we take some questions now या डेफिनेटली, या डेफिनेटली or should we take them at the end? What do you suggest? Like whatever you feel वी कैन comfortable. डू, वी कैन टेक नाउ आल्सो, नो इशू। Okay, so there is one question that is came. They're asking like tripod. What is it? Like you were mentioning tripod. What is सो tripod? And like I don't. I've सो never heard. ट्राइपॉड, like I can show them some photos, just give me 1 minute. So basically tripod is nothing but like अगर आपको कोई भी चीज को एक stand करना है, तो अगर तीन अगर एक stand का तीन पैर होंगे तो उसको tripod होता है. Pod means legs and tri means three. So there are three legs of it. So there can be hexapod, there can be octopod. There is a tripod एक छोटा सा एक समझ लीजिए कि कैमरा का स्टैंड या फिर फोन का स्टैंड होता है, which is used for video editing. Not necessary that you need to have a tripod. If you want, you can even use your books. You can use your PVC pipes. Yes. जैसे समय सर ने बताया, to actually create your own tripod. A DIY tripod आप अपना खुद का बना सकते हो. So these are the tripods, ये सब tripods है। ये कैमरेस के लिए होता है, like you will be using phone, so you can have this type of tripods if you have. If you don't have, you can search on YouTube how Can to you make search your own in the tripod. same screen? Samay, can you search DIY tripod using PVC pipe? We can just show it Yes, to them. Like it's very easy to make. Like you'll enjoy building it. तो and आप अपना books भी use कर so सकते हैं, कुछ भी use करके stand बना सकते so हैं. Like बहुत so as सारे. you can see, he has created tripod with cardboard, so you can make this. There are some tripods which you can make with PVC pipe also. So you can see this one. He has created with PVC pipe. So you have to do some jugaad if you have to create some video. Yeah, If you don't have, if you completely. have, then that is great. बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि फोन को हाथ में पकड़ के वीडियो बनाना इज नॉट गुड। वो बहुत बेकार लगता है। आप ट्राई करो कि आप ट्राइपॉड या तो आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो बनाओ ट्राइपॉड। You don't have any other option, or else use some table to hold that phone. Like you can use some books, as Suman told. You have to do something. And then, so once you have your video ready, so now what you have to see is, just a minute. Yeah, please put down your questions in the chat box. We'll be taking all Yeah, your questions definitely. and noting them down at the end. So now once you have your video ready with good voice, आपने सब कुछ noise वगैरह निकाल दिया है, now it's time to upload on YouTube. But before uploading, you should have a great thumbnail. It should be catchy, because थंबनेल एक वो चीज है जो सबसे पहले मैं देखूंगा। अगर मैं आपका व्यूअर हूँ, सबसे पहले मैं थंबनेल देखूंगा। अगर मेरे को थंबनेल बेकार लग रहा है, मैं आपकी वीडियो नहीं देखूंगा। सिंपल है।
थंबनेल को कैची बनाओ, उसमें पता हो कि इट्स प्रोजेक्ट इज अबाउट व्हाट यू आर क्रिएटिंग. सो आई विल सजेस्ट यू सम टूल लाइक कैनवा इज अ फ्री टूल, यू कैन यूज इट. उसका प्रीमियम आपको नहीं लेने की जरूरत नहीं है. फ्री टूल्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, हाउ यू कैन एडिट योर ओन थंबनेल फॉर योर यूट्यूब चैनल. सो लाइक थंबनेल्स में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो. सो आई विल जस्ट शो यू हाउ यू कैन यूज दैट. So if you will go to your Google, just search for Canva. You will search for Canva, then you can, like, if it asks you for login, you can like log in with your Gmail. Once you are logged in, then you can go to the search bar. इस पे आप सर्च कर सकते हो YouTube. Some your PPT screen is still visible actually. Oh, sorry, just a Google Chrome is not. now is it visible? So this is the Canva. ये Canva है. आप इस पर जाओ, इस पर क्लिक करो, ये आपसे लॉगिन मांगेगा, तो आप अपने जीमेल से इस पर लॉगिन कर सकते हो. और ऊपर आपको सर्च बार दिखेगा, इसमें आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब थंबनेल. सो इट विल सजेस्ट यू सो मेनी थंबनेल्स. लोग बागों ने बहुत पहले से बना के रखे हुए हैं. अगर आपको इनका ही थंबनेल यूज करना है कि लाइक यू कैन जस्ट ऐड योर प्रोजेक्ट इमेज टू इट, सो इट विल मेक गुड. एंड इफ यू वांट टू एडिट दैट थंबनेल, यू कैन डू दैट आल्सो. So I will just show you some example how you can do that. So example, like I have used this thing, this thumbnail I will use. I will just click on customize the template. Then if you want to remove this image, just click on this image, click delete image. It will delete the image. Now what you can do is you can upload your project photo, upload file, click on this upload file. So it will take you to this thing. You can upload your project image. Once you got this image, it will be here. Just drag and drop. You will get the project image here. Now, if you want to change, like it's about like something home automation or something like that, if your project is about, if you want to add some logo, then you can do that also. Like if you want to add some utter logo, you can add this utter logo like this. Then you can go to element. You can have something like this. You can have, click on this. Now you can click like this on layer, go to layers, click on send to back. So you will be able to see the full logo, which will make it look good. If you want to add your school logo or some other logo, which you have your team logo, if you have, you can add that also. If you have your team name, you can add your team name. If you want to add something related to your, if you have your own YouTube channel, so you can add if you have your mail so that people can contact you. So you can add your mail here, something like that you can do to make it catchy. Your thumbnail should be very catchy, I'm telling you, because वही फर्स्ट चीज है जो व्यूअर्स देखेंगे, वरना फिर अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर लाइक नो वन विल वॉच दैट. So it should be good. Once you got the thumbnail, upload it on YouTube and you are ready to go. Now I think we can take some questions. So, like the presentation is done, Samir, like, or do you want to add? Yes. Yeah. Yeah. So there are, thanks a lot, Samir. Like, I hope the students have got a basic gist of how to actually create a video and a thumbnail, and also like the steps are very simple. It's again, I'm telling it's not rocket science. आपको उसको घबराना नहीं है कि कैसे करे, कैसा वीडियो मेरा दिखेगा आगे चल के, मतलब like will it turn out good or not. Like a question was that, like, there was this checking in the YouTube chat, and that they were telling that, sir, is it fine if I don't remove the background noise? Is it fine if I don't put in any instrumental sound? ठीक है, like it's not mandatory. It's just to enhance the appearance of your video. It's nothing. None of these steps are mandatory. So आपको आपका वीडियो आप जैसे भी बनाना चाहते हो बना सकते हो. ये स्टेप्स है आपको वीडियो को और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, जो समय सर ने आपको बताया. So like basically अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी में अगर गन चल रहा है, अगर गन का साउंड नहीं है तो वो आपको कैसा लगेगा? It's like that only. Yeah, it's like that only. तो वैसे ही अगर आप गन का साउंड डालोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ गन चल रहा है. तो ऐसे ही अगर आप बैकग्राउंड नॉइज डालोगे, बैकग्राउंड नॉइज हटा दोगे, बैकग्राउंड म्यूजिक एक अच्छा सा डालोगे, तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ मूवी टाइप देख रहा हूँ मैं, तो वो सही रहता है. Completely agree. And Yeah. one very important question जो आ रहा था कि क्या video submission, video बनाना mandatory है as part of School Innovation Marathon? I'll take this question. So generally students, like whatever you do, whatever you have done till now is that you have formed your teams and you might have completed the design thinking course that was there. So main thing is that, like, even after creating of the, like even after forming the team, main thing is that after you build the project, you need the only submission that goes to the evaluator is the video that you do.
So the video submission is the most mandatory thing and most important thing of your participation journey. Only after you complete the video and submit it, you will be getting the certificate of participation for School Innovation Marathon. So that's very much needed. Next, Samir, the next question that is coming is that what are the different, like, can I use any other software apart from this also? I'm using Yeah, definitely. Like अगर आपको Premiere Pro use करना आता है, अगर आपको KineMaster use करना आता है, तो use that. But if you don't know like about editing, use VN. It's very user friendly. बहुत easy है. You can go to YouTube. YouTube पे जाओ search करो how to use VN, how to edit video in VN. तो आपको बहुत सारे videos मिलेंगे. Watch that video और आपको समझ आ जाएगा. And someone is asking like, can we use one phone? Definitely you can use. लाइक ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस मैंने डाला क्या ताकि आपको एक ऑडियो अलग मिले और रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग अलग मिले, ताकि आप उसमें से लाइक इजीली आप उसको रिमूव कर सको बैकग्राउंड जो नॉइस है। बट अगर आपके पास एक फोन है, वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको MP3 में कन्वर्ट करो। अगर आपको वॉइस लाइक बैकग्राउंड वॉइस रिमूव करना है तो लाइक MP3 में कन्वर्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर यूज करो, उसका बैकग्राउंड हटाओ, देन यू कैन यूज इन योर वीडियो। Another question is coming is that like where should we upload the YouTube video? My working model is now completed. After making it, video is also edited. Where should I upload it in YouTube? Okay. So this is a very interesting question. So Samay, would you like to? So like they have to upload on YouTube only, correct? Yeah. Yeah. So you can upload on YouTube. See, when you will upload the video, it should be public. It should not be private. Some of the things which you should keep in mind. जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो एक टाइटल होगा जो आपको प्रोजेक्ट का डालना होगा, वो अच्छा होना चाहिए कि लाइक इफ योर प्रोजेक्ट इज अबाउट स्मार्ट इरिगेशन, सो आप ये नहीं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट डाल दो बस. So you can type how to make an irrigation system with Arduino or some other microcontroller which you have used. So it should be like catchy. And in the if you will go to the setting, it will ask you to add keywords. So you can add different keywords for your video. Like if your video is about agriculture, you can add some keywords which is related to agriculture. So YouTube will suggest your videos to more viewers. तो आपको ज़्यादा views मिल सकते हैं, आप ज़्यादा लोगों के पास जा सकते हो, ज़्यादा लोग आपकी videos देखेंगे basically. Yeah, and there are 350 plus students and teachers who are watching it right now, but likes abhi tak hardly 100 हुए. So if you like this session, please hit the like button so that the video can reach many more audience. Another, like, going on to the next question. The next question says that how to download CapCut in PC. So CapCut that Samay sir had just mentioned, it is a PC only software. So basically आप बस Google कर सकते हैं CapCut. Like, would you want to share the screen and show it, Samay? Yeah, just a minute. I will show them out. Okay. Yeah. So you can just Google CapCut on the on your laptop, and you can just go to the screen. We'll just see a few steps. So you can go to the Google, just type CapCut for PC, download, Mode APK you can say. So just click on this first site, you will get download this APK. There are so many websites where CapCut is available. You can click on this one, download the CapCut one. It will give you. And CapCut is only on PC, right? On Windows. Yeah, it is for Windows. Yeah, you can download this in Windows. And if you don't want to use CapCut, अगर आपके पास और कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज करना आता है, जैसे Filmora हुआ, तो आप Filmora यूज करो. लाइक ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको CapCut ही यूज करना है. CapCut easy है, that's why I told you. Microsoft Clipchamp भी available है, वो भी free है सबके लिए. Yeah, there are so many apps. There are so many apps. Yeah. Just keep in mind some of the points which you have to, like, you should add some caption to your, like, you should add some text to your video. वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हो basically. तो आपका लाइक सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो वो फ्री होना चाहिए. ये नहीं कि आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया, ऊपर देखते वाटर मार्क आ रहा है तो वीडियो अच्छा नहीं लगेगा. लाइक यूज सम सॉफ्टवेयर विच इज लाइक विदाउट वाटर मार्क, सो इट विल बी गुड. क्योंकि जो VN ऐप है वो विदाउट वाटर मार्क देगा आपको. सो बहुत सारे टूल्स हैं जो भी आप यूज कर सकते हो, यूज करो. Okay, thanks for that, Samay. Like, that answers the question in a very easy way. Yeah. Next question is, what should be the language in the video? Very interesting question. I'll just take this up. The language of instruction, whatever you are doing in the video, should be ideally Hindi or English, preferably. But if you are unable to shoot, like if you feel that you can express your, because होता है ना कि हम अपना best दे सकते हैं only in a regional language. So if you want to use your own regional language, we encourage you to do so. But just see that, like, if you can add a bit of subtitles so that the evaluators get a better gist of it.
Preferably try to put it in Hindi or English only, but otherwise you can actually put it in other languages also. Another question, Samay, is that like you mentioned about instrumental music. So what are the steps to download it? So there are some websites. I will just show them how they can do that. Just give me 1 minute. And Like if they want, they can get that from YouTube also. yeah, YouTube the saw main like thing is that कि आप बस Google करोगे how to download instrumental music या फिर YouTube पे डाल दो, ample number of just resources are so just say unlimited on YouTube. yeah. So just say no copyright music for YouTube. Just type that. Click on this first website. You will have so many music. So सारे Ben music को Sound is a सुनो. great collection. Please, like you can use anything that you want. Yeah. And just that की volume उतना ज़्यादा मत रखना because these are full volume Correct. ones. You have to Correct. reduce the volume by using. Yes. So बहुत सारे सॉन्ग हैं, सारे सॉन्ग एक करके ट्राई करो जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये हमारी वीडियो के साथ शूट हो रहा है, क्योंकि देखो आपका वीडियो इज रिलेटेड टू टेक, यू आर शोइंग समथिंग, सो जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो टेक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सैड म्यूजिक यूज कर लिया तो आपका वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। यूज समथिंग विच इज लाइक उसमें थोड़ा हाई पिच भी हो, थोड़ा लो पिच भी हो, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। And someone is asking like from where we can download the VN app. So just go to Play Store, type for VN. It will give you, I will just show you. So just go to your Play Store, like this is in web. You can open Play Store in your phone. Just type VN, Video Editor and Maker. This is the app. Download this app, use it, create your video and upload. That's it. An interesting question for you, Samay. Like, sir, what if we download this and we get virus? Virus, like? No, you won't get. It's on These Play all Store. softwares are completely free and protected. They are scanned by Yeah, Google. it's on Play Store, so no issue with that. Yeah, So, don't like, worry if you are about that. thinking You it are will, mentioning yeah. it. So if you are thinking it will get virus in my PC, don't install. It depends on you. There are so many softwares. Use Filmora if you are something like that. There are so many softwares for that, and it's on Play Store VN, so it will not have any virus, so you can use it. Yeah. Another question that I'm coming is from Velpu. Sir, I had a pretty good idea, but I don't have a prototype ready yet. Can I still upload my idea? It has a roadmap, features, and working of it. So, like Velpu, like one very important thing and mandatory thing as a part of School Innovation Marathon is that you need to have a working prototype. You can't submit just an idea. So all the projects that have been submitted are working models of it. So you need to create a small working prototype of it that explains your creation, and in that, like even if it is a small creation, that is also fine. But a working prototype is mandatory in this submission. And someone is asking like any website for thumbnails. So I have shown you Canva. You can use this for. And if you will go to like on Google, if you will go, you will search like website for thumbnail creation. There will be so many website. You can check it once. एक बार check करो, आपको ही पता चलेगा कि like क्या क्या है। बहुत सारे tools है, बहुत सारे tools है। Like अब like हो सकता है कि मैं कुछ बताना भूल गया हूँ। बहुत सारे tools है, एक बार Google पर जाओ, search करो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी videos बहुत अच्छी बना सकती है। Yeah. So like you can use some templates like subscribe for more videos, something like that. बहुत सारे green screens रहते हैं, आप अपनी videos में use कर सकते हो, like thumbs up button होता है, बहुत सारी चीजें आप use करो। Next someone is Qasim ji, there is a question. So, sir, we have a school YouTube channel. Should we upload it over there, or should we upload it on our on the individual team's YouTube channel? So ideally, sir, we would be recommending, if possible, to upload it on your school YouTube channel, because वो आपके school के YouTube channel में हमेशा के लिए रहेगा. If it is not possible, there's no mandate that the YouTube channel should be of the student of the school. कोई भी चीज चलेगा YouTube पर अगर आप upload करते. Just one thing keep in mind: whenever you upload the project, don't keep it private. Keep it as a public video or maybe an unlisted video. Try to keep it public itself, so that, because what happens is that कि अगर आप उसको private रखते हैं तो और कोई उसको देख नहीं सकता. So you need to keep the video, the visibility as public whenever you are publishing the video. And any YouTube channel is fine, preferably the school YouTube channel if possible, so that it creates a repository for the school as well. So someone is asking, sir, like, so we will give all the like link in the description from where you can download. Don't worry about it. After this session, we will update the description. Yeah, we'll do that. Yeah.
a lot of questions coming in. Okay, so one is how to ensure that semester, like how to ensure that these videos get many more views. Any tricks that we can use? So what you can do is, first thing, thumbnail. Thumbnail should be catchy. वो फर्स्ट चीज होती है जो व्यूअर देखेगा. अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो दे विल स्किप फॉर श्योर. क्योंकि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो आप सबसे पहले थंबनेल देखोगे. अगर उसका थंबनेल अच्छा है तो आप ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक कर दोगे. आपको कुछ करना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आप क्लिक करोगे. और उसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, एज आई टोल्ड यू, लाइक अगर आप स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बना लो, अब आप लिखते हो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, अब उसको समझ ही नहीं आएगा बंदे को है क्या ये. So if you will say how to make smart irrigation system with Arduino or some other controllers, so you will get to know, okay, he will be telling how I can create smart irrigation in this video. So I should watch this video. ऐसा कुछ होता है. And then if you will go to like in description, if you will click on more, so there will be something add keywords. So you should always add keywords for your video. So there are some website, if you will go like free generate keywords, if you will type on Google, it will show you some website, click on that. So what you can do is आपका जो टाइटल होगा, जैसे कि मेरा टाइटल है हाउ टू मेक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, आप उसको कॉपी करो, उस साइट पे पेस्ट करो. वो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स जनरेट करके देगा, ऑलमोस्ट 30-40 कीवर्ड्स आपको जनरेट करके देगा. तो आप उन सब कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन में डालो. और यू कैन ऐड सम हैशटैग इन योर डिस्क्रिप्शन लाइक how to make smart irrigation system. Smart irrigation system will be used in agriculture. So you can use hashtag agriculture, something like that. Like you can use hashtag tag innovation, something like that, which will recommend your video to more audience. तो इससे आपको views ज़्यादा मिलेंगे. Great. Thanks a lot for showing that out. Another question is that like the deadline is only 10 days away. Can you extend it? I don't know. I should be mentioning this over here or not. I can get screwed up for this. But unofficially speaking, we are talking with the ministry if the deadline of School Innovation Marathon can be extended by a few days, around a week or so. So, but please don't be reliant on it. So this is just a secret message for the viewers who are watching it today. So we are planning to extend the date, but don't rely on it. Keep working on your projects, keep shooting the videos, start editing it, so that don't wait for the last day, because last day generally the portal gets hanged because there are many users who are trying to come and enter the videos or submit the projects at once. So please don't wait for the last day. Try to submit it as early as possible. Can it be a software working model? I have a model in Tinkercad. So this is an interesting question. So if your project is in Tinkercad, like what prevents you from actually printing it on using a 3D printer? So please don't submit your Tinkercad project as a design over there itself. Try to print it. Even if you have just a 3D printing project, that is also fine. There have been many amazing 3D printing projects that we have seen without any electronics too. That is completely fine. But just that, don't submit the design of it. Like, don't submit the Gerber of it, or don't submit the design file of it. Because उससे आप समझ में नहीं आएगा कि आपका project है क्या. You need to actually print it and show it's working. So please do that. That is very, very much needed. And working prototype is the mandatory thing. Another one more question is coming like, sir, do we have to, like, project should be in prototype, so your project should be in working condition. तभी कोई देखेगा आपका वीडियोस. लाइक आप यूट्यूब पर से फोटोज डाल दोगे तो नो वन विल वॉच इट. प्रोजेक्ट को वर्किंग कंडीशन में लाओ, लाइक इट शुड बी गुड. उसका वर्किंग क्या है, फ्यूचर में आप क्या उसमें डाल सकते हो टू मेक इट मोर लाइक गुड. तो आप फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हो प्रोडक्ट में, वो भी आप कर सकते हो. सब कुछ डालो, वर्किंग का प्रोजेक्ट होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए. Yeah. Under which head on School Innovation Marathon portal should I upload the YouTube project? So when you go to the idea submission page, so there will be 2 or 3 things asked, like what is the project name, what is the theme you're using. So based on that, you need to submit the project. You need to just select the theme that you have built on. So there are 8 themes, 7 themes based on the topic of Viksit Bharat, and one other theme जिसमें आप अपना खुद का theme define कर सकते हैं. So you can just select that, you can enter the title of your project, and over there's a YouTube link of your video. That's the section. So over there you need to just submit it. You need to just paste the YouTube link over. So yeah, I think those were it. One last question I think we have. So what are the different types of prototype we can build? Samay, you want to? Like different types of prototype in the sense, like the projects they will be building, correct? Yeah. So it depends on you. Like the project should be under the themes, adult theme.
फर्स्ट थिंग जो आप प्रोटोटाइप बना रहे हो, सो आपका प्रोटोटाइप वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि उसी बेस पे अटल आपका लाइक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेगा। अगर प्रोजेक्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो वाई दे विल सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट। तो यू शुड कीप इन माइंड दैट प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप अच्छा होना चाहिए। लाइक आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है वो अच्छा होना चाहिए। कि आपसे प्रोजेक्ट लगे तो आप कुछ समझा नहीं रहे किसी को, तो दैट इज नॉट गुड। उसको अच्छा करो। एंड एज आई टोल्ड यू, मेक अ स्क्रिप्ट फर्स्ट, उसको प्रैक्टिस करो, आफ्टर दैट रिकॉर्ड अ वीडियो, दैट विल बी गुड। And this time the competition is much larger. Last year we had around 19,700 teams. Till now we already have 1,000, 1 lakh, 1.5 lakh teams have already registered. So the competition will be larger, but this time the top 1,000 teams will be announced. So no need to worry about it. But you need to make your project very unique. जैसे हमने Yes. पहले के वीडियोस में बताया था कि लाइक आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप जो चूज करो वो बहुत यूनिक होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली स्मार्ट डस्टबिन बना दिया या फिर स्टडी लैम्प बना दिया। जो कॉमन प्रोजेक्ट्स, यूट्यूब के कॉपी प्रोजेक्ट्स को ट्राई करना अवॉइड करो। ट्राई टू मेक समथिंग वेरी नोवेल। अगर वो छोटा होगा, एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, देन दैट इज आल्सो फाइन, बट इट शुड सॉल्व अ कम्युनिटी प्रॉब्लम और एक्चुअली रियल प्रॉब्लम आई शुड से। तो उसी से आपका एक्चुअली विनिंग का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो बेसिकली इट्स लाइक अगर आप स्मार्ट इरिगेशन बनाते हो तो स्मार्ट इरिगेशन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे। नाउ व्हाट यू शुड थिंक इज कि हम उसके अंदर और क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक फार्मर्स के लिए और क्या डाल सकते हैं। सो टू मेक इट लाइक मोर इंटरेक्टिव, अच्छा दिखना चाहिए। अब स्मार्ट इरिगेशन में व्हाट डन इज लाइक अगर सॉइल का मॉइस्चर कम होगा, ऑटोमेटिकली द मोटर शुड पंप शुड ऑन। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यू शुड थिंक व्हाट एल्स आई कैन डू कि लाइक जब फार्मिंग का एक टेम्परेचर है वो मैं देख सकता हूँ क्या, लाइव में देख सकता हूँ क्या, लाइक कैमरा हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट some AI, how I can implement to that project, that you should check, that you should do. So आपके winning chance है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं उस चीज से। Great. Yeah. So yeah, so that actually brings us. It's already 11:50. We have taken a precious 50 minutes from all our viewers today Sunday. Like I think many of you have many plans and also. So that is it. So we would be drawing our session to our close. Hope you all have enjoyed it. If you have enjoyed it, please put on your comments below and do hit the like button. Thanks a lot to Samay. Thanks a lot for enlightening us, guiding us through various tips and tricks. This video is always available on YouTube. अगर आपको बाद में कभी return आना है, अगर आपको फिर से steps देखना है, it's already available. It will be always there for you. So yeah. So thanks a lot, Samay. Thanks a lot for everything. Thanks a lot for creating those amazing videos on the ATL equipment video series. I think that's an inspiration for all our viewers. वो लोग जाकर देखेंगे and they'll get a view कि कैसे actually videos बनाना है. And the steps and the tricks that you shared are very helpful over here. And I hope the students will gain a lot from it. Any closing last thoughts that you would have to? I just want to say thanks to Adult Team for giving this opportunity to Bharat team for creating such content, for arranging this webinar. Thank you so much. And I think we will be having more webinars related to this, like in future. Let's see. Yeah. Any last like tip that you want to give any student? I will just say succeed होना है, video should be catchy. आप कुछ मत करो, बस अपने वीडियो को अच्छा बनाओ, क्योंकि वही है जो अटल जिससे आपकी वीडियो सेलेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, आपकी वीडियो स्किप कर दी जाएगी। आप वीडियो को अच्छा बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो उसकी, उसमें टाइटल्स डालो, कैप्शंस डालो, जो आप कर सकते हो। वीडियो मेन है, मेन पार्ट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके बाद आप प्रोजेक्ट बना लेते हो, अटल से विल बी सिलेक्टिंग बेस्ड ऑन द वीडियो विच यू हैव क्रिएटेड। अगर आप वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे कि प्रोजेक्ट इज अबाउट व्हाट, तो उनको भी समझ नहीं आएगा, उनकी भी कोई गलती नहीं होगी, उनको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं। तो पहले स्क्रिप्ट लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर उसको स्क्रिप्ट को MP3 में डालो, फिर वॉइस रिमूव करो, क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। ये लास्ट मोमेंट है, आप इतना मेहनत करो, प्रोजेक्ट पूरा आपने बनाया, डू डू इट, क्योंकि यही चीज है। That is the main statement. This is the last step that you do, and the most important step. Yeah. Very encouraging statement. Thanks a lot, Samay. Thanks a lot for all the viewers who have joined in today. Will like do let us know later कि आपको कौन सा और भी webinars करना है, कौन से topics पे करना है. On behalf of the whole Atal Innovation Mission Niti Aayog team, I would wish you all the best in the last stage of marathon. We would love to see your creations. Keep them coming in, and for any doubts, we are always there for support. Whatever you need from us, we are always there. So thanks a lot. Have a good day. Happy Sunday and happy New Year.